very warm good evening to everyone. My name is Parul Sharma, and on behalf of uTrade and Share India, I would like to welcome you all to our today's webinar. इसका टॉपिक है बिल्डिंग अ ट्रेडिंग सिस्टम स्ट्रैटेजी टू डिप्लॉय। और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हैं मिस्टर विवेक। हेलो सर, वेलकम टू द वेबिनार। हाय पारुल, थैंक यू। विवेक सर एल्गो ट्रेडिंग के एक्सपर्ट हैं और इनका कंट्रीब्यूशन इस फील्ड में काफी इंपॉर्टेंस रखता है। मिस्टर विवेक के इम्प्रेसिव बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो मिस्टर विवेक कंप्लीटेड हिज एमबीए इन सिस्टम्स और उन्होंने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम इन अप्लाइड फाइनेंस कंप्लीट किया है आईआईएम कैलकाटा से। उन्होंने एमएफ ग्लोबल सिफी सिक्योरिटीज के लिए इंस्टीट्यूशनल एल्गो डेस्क सेटअप किया था, जहां उन्होंने हाई फ्रीक्वेंसी प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स के साथ कोलैबोरेट किया। मिस्टर विवेक एक एजुकेटर भी हैं और एनएससी ट्रेनिंग एकेडमी, बीएससी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और एनआईबीएम पुणे जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में एल्गो ट्रेडिंग और रोबो एडवाइजरी के लिए विजिटिंग और गेस्ट फैकल्टी है। आज मिस्टर विवेक आरबीटी एल्गो सिस्टम्स के सीईओ हैं, जो एडवांस्ड एल्गोरिथम्स डिजाइन और डेवलप करते हैं इंडियन और इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए। इसके साथ ही एल्गो एक्स कन्वेंशन के फाउंडर भी हैं, जो एल्गो ट्रेडर्स और क्वांट्स के लिए एक प्रीमियर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है। So, sir, if I may ask, how do you feel like you founded AlgoX Convention? So, platforms like AlgoX Convention, या even हमारा webinar जो आज हम कर रहे हैं, how important is for the upcoming as well as the seasoned traders to attend these and learn from these? Believe me, Parul, how many years you spend in market, we are still beginner. Okay, I feel that because market में learning constant है. So by doing these kind of events, we see that not only beginners, right? Of course, unko to ek but even the people who have been in market, they really like to meet other traders, talk to other traders. Sometimes after 20 years also, you could be like, I don't know much, right? So when market changes, your strategy may not be working or whatever. So it's very interesting. And these initiatives, kudos, I mean, I've been following the initiatives and I think it's very, very good for all the people interested in the system. So, आज के सेशन में मिस्टर विवेक हमें ट्रेडिंग सिस्टम बिल्ड करने का प्रोसेस समझाएंगे, स्ट्रैटेजी फेज से लेकर डिप्लॉयमेंट तक। चाहे आप बिगनर हो या एक्सपीरियंस ट्रेडर, आपको यहाँ से एल्गो स्ट्रैटेजीज बनाने और डिप्लॉय करने के वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलेंगे, जो आपकी ट्रेडिंग को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मैं ये भी बताना चाहूंगी कि uTrade Algos रिटेल ट्रेडर्स के लिए एल्गो ट्रेडिंग लेके आया है। जो अब तक फैसिलिटी सिर्फ इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के पास थी, वो आज रिटेल ट्रेडर्स के पास भी हैं विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। With the help of expert-made strategies, you can navigate the world of algo trading very smoothly. आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सेशन के दौरान एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, अपने सवाल चैट बॉक्स में लिखते रहें और हम Q&A सेशन में उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर अ वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और अब मैं मिस्टर विवेक को इनवाइट करती हूँ सेशन शुरू करने के लिए। सर, द स्टेज इज ऑल योर्स। So I hope you can see the screen. Yes, sir. Okay, great. So basically हम लोग ये सेशन में एक प्रोसेस देखेंगे of how to create a system and then we will look at some practical part वैसे like Parul said where uTrade is enabling, she said a very important thing, enabling retail traders to get access to things जो अभी तक institutions के पास थे. So a lot of technology which earlier was not available is now available at our hands, and we can see that. We'll just see one example of that. And then I will create one strategy, right? One or two strategies, and then we'll see, analyze the results of that. So we'll also see how to evaluate a strategy. Okay. And then finally, we'll see how to deploy the strategy. How easy it is to deploy where you want to put the strategy live. So beach mein any Q&A you have, you can ask. We would try to answer it. If we miss, then towards the end, we'll keep 5-10 minutes to answer that as well. Okay. So first, very important disclaimer, right? So of course, there are risks in trading derivatives due to leverage. But these all strategies are for educational purpose only. You may want to consult a financial advisor before deploying them, right?
ओके, तो जब हम ट्रेडिंग का कोई भी प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, ब्रॉडली देर आर two approaches we can take. One, most of us might be familiar, and even the other process, lot of us are now familiar because we have had a lot of option writing in India. But coming to just recap it, directional trading is where अगर एक प्राइस ब्रेकआउट जैसा कर रहा है तो हम बाय करते हैं expecting price to continue to go, right? So that is directional, either buying or selling, right? So in that, the idea is no price is too high to buy, no price is too low to short. Non-directional trading, on the other hand, is where we are expecting price to remain sideways. So when price doesn't go either ways, that is a non-directional market, and we want to benefit as trader. So ideally non-direction, what we do, ऊपर गया तो आप short करोगे breakout पे, और गिर रहा है market अगर तो breakdown पे आप long करोगे, right? So that is a non-directional approach. With options we can play it little differently also, but basically हमको strategy बनाने के पहले आपको सबसे पहले ये choose करना है what mindset are you putting for this strategy, right? So for example, for this demo I'm going to take non-directional strategy idea little bit plus direction. It's a mixture. हम लोग थोड़ा सा उसको directional plus non-directional type का भी mixture देखेंगे. So that's an interesting approach where we'll try to create a hybrid kind of system. Okay. Now, what is the strategy going to be based on? Okay, so we have to choose. So I'm going to basically run this on Nifty Index Weekly option. हम लोग इसको Nifty Index Weekly options पे run करेंगे. And what is a strategy we are going to do? तो basically हम लोग sideways market के लिए एक straddle बेचेंगे. Basic ideas, most of you might be familiar. Straddle is nothing but at the money का अगर हम स्ट्राइक चूज करेंगे और सेम स्ट्राइक सेम एक्सपायरी सेम क्वांटिटी का एक कॉल एक पुट विल शॉर्ट, दैट इज द शॉर्ट स्ट्रैटेजी. एंड करंट वीक का निफ्टी वीकली. सो वी हैव वीकलीज लेफ्ट इन which indexes may we have weeklies. I'm sure some of you must be know, but must be knowing, many of you must be knowing, but if someone doesn't know, yes Ankit, Nifty and सेंसेक्स बस दो ही है इंडेक्स अभी जिसमें वीकली ऑप्शंस बचे हुए हैं. बाकी सब इंडेक्सेस में हमारे पास मंथली ऑप्शंस है. एंड अभी कल ही सर्कुलर आया कि सेंसेक्स का वीकली ऑप्शंस का डे इज गोइंग टू चेंज. अभी इट इज फ्राइडे. व्हाट इज द न्यू डे गोइंग टू बी? ट्यूसडे. दैट्स राइट अंकित. सो यस ललित, बराबर है, ट्यूसडे हो जाने वाला है और निफ्टी थर्सडे का थर्सडे ही है. So yes, we can. Right. So when we are building the system now, just think of it like step by step एक checklist है, हमको वो टिक करना है. So what do we have to do? First we have to choose which instrument we are going to trade. Nifty है, Sensex है, Bank Nifty है, monthly है या weekly option है, cash है या future है. Example, I'm taking options here and I'm taking Nifty and weekly. So whatever is underlined is what I'm taking. But एक system बनाने में भी बहुत लोग बोलते हैं कि ह्यूमन एलिमेंट नहीं है, इमोशंस नहीं है. ऐसा नहीं होता है. मैनेजर जो बना रहा है सिस्टम या इन्वेस्टर ट्रेडर जो भी बना रहा है उसको चॉइस करना पड़ता है ये सब चीजों में से कि उसको क्या ट्रेड करना है, कितने कैसे ट्रेड करना है ना. तो देयर इज अ रोल ऑफ ह्यूमन, सिग्निफिकेंट रोल, आई वुड से, नॉट स्मॉल. फिर अब ये इंट्राडे सिस्टम है, बीटीएसटी है या पोजिशनल है, बाइंग है या राइटिंग है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इंट्राडे करेंगे एंड राइटिंग करेंगे, राइट? सो दैट इज क्लियर नाउ. वी आर गोइंग टू डू इंट्राडे राइटिंग फॉर निफ्टी वीकली ऑप्शंस. वंस यू डिसाइडेड दैट, फिर हमको रूल्स बहुत क्लियर करने पड़ते हैं, राइट? सो क्लियर कट रूल्स ऐसा है कि 920 को हमको निफ्टी का एट द मनी मंथली ऑप्शन at 0 DT base. What is 0 DT? Anyone can tell what is 0 DTE? So what is DTE? Days to expiry, right? And 0 DT मतलब expiry day itself, right? आज ही expiry day है, correct? So थोड़ा सा terminology है because जो tools भी आप use करेंगे या देखेंगे उसमें ये terminology रहेगी तो it might help. ठीक है? So 0 DT पे
9:20 को ATM कॉल और पुट बेचना है, you want to sell. Okay, and so this is actually a short straddle, right? So typo was straddle है. Now what I'm doing, I'm going in the same day, हम एक strategy को दो strategies में break up करें, right? So first just think of it as strategy 1 and strategy 2. I'll explain little more detail why this is, but it is better as a trader to have a variety of strategies rather than relying on a single strategy. Okay. तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी 9:20 एंट्री हो गया. सेकंड स्ट्रैटेजी जो है सेम डे पे 2 o'clock को एंट्री होगा. ठीक है, पहले हम एंट्रीज देख लेते हैं. एक 9:20 को एंटर होगा, एक 2 बजे एंटर होगा. अब एग्जिट रूल्स क्या है? व्हाट आर द एग्जिट रूल्स फॉर दीस? फर्स्ट स्ट्रैटेजी जो है उस पे स्टॉप लॉस है 50% ऑन ईच लेग, मतलब कॉल और पुट ईच लेग पे 50% का एसएल है. एंड एग्जिट टाइम है 11:25. सो व्हाट इट मींस, अगर 11:25 तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, राइट, तो 11:25 को एग्जिट कर दो, टाइम बेस्ड एग्जिट, विच एवर कम्स फर्स्ट, स्टॉप लॉस इन परसेंट और 11:25 गेट आउट. दैट इज वन थिंग. द अदर थिंग इज ईच लेग का स्टॉप लॉस इंडिविजुअल है. वो हम थोड़ा और रिकैप करेंगे इसको, प्लस व्हेन वी क्रिएट इट यू विल सी ईच स्टॉप लॉस का लेग इंडिविजुअल है, राइट. तो एक का एसएल हिट हुआ तो दूसरा इंटैक्ट रहेगा, दूसरे का जब एसएल हिट होगा या टारगेट टाइम बेस्ड एग्जिट आएगा वो अपना इंडिपेंडेंट. ये स्ट्रैटेजी 1 हो गया. स्ट्रैटेजी 1 क्लियर टू एवरीवन? इफ यस जस्ट गिव मी अ 1, जस्ट टाइप अ 1 और जस्ट टाइप समथिंग. इज स्ट्रैटेजी 1 क्लियर टू एवरीवन? अब क्या है, 11:25 एग्जिट हो गया. नाउ वी विल अगेन एंटर द मार्केट एट 2 o'clock. सेम स्ट्रैटेजी वापस करना है 2 बजे. दिस टाइम okay, there is a difference, just see in the stop loss. Instead of 50% SL हम 100% SL रख रहे हैं. Ankit, it will be a weekly only because Nifty में we have weeklies, right? Still, thankfully. So weekly contract करेंगे. Yes. Okay. So 2 o'clock को we will enter again, right? Same entry rule doesn't change. Only thing is time is 2. Exit rule क्या? अब इसका SL 100% हो जाएगा. क्यों 100 instead of 50? अब 2 बजे तो एक्सपायरी थोड़ा पास है, तो एक तो प्रीमियम्स कम हो जाएंगे यूजुअली, राइट, और वॉलेटिलिटी थोड़ी बढ़ेगी. सो वी वांट टू गिव मोर रूम फॉर द ट्रेड टू ब्रीथ. सो 100% एसएल ऑन ईच लेग एंड एग्जिट एट 3:15. अगर एसएल नहीं हिट हुआ तो एग्जिट एट 3:15, राइट. एक वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा मैं. अगर ऑप्शन 50 रुपीज में बेचा है, 50 रुपीज में सेल हुआ है और स्टॉप लॉस 50% है, तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ द स्टॉप लॉस? क्या प्राइस पे वो कट जाएगा ट्रेड? 50 रुपीज पे बेचा है और 50% का एसएल है, तो 75 रुपीज. परफेक्ट, एवरीबॉडी हैज गॉट इट राइट. एब्सोल्युटली 75 पे कट जाएगा. जस्ट टू रिकैप, कीप थिंग्स वेरी सिंपल. एसके वाई 25 नहीं, जब आप ऑप्शन बेच रहे हो 50 पे, लॉस कब होगा? ऊपर गया तो. यस, यू गॉट इट राइट. So that is just why one thing I asked, because in selling your stop loss is above the selling price and not below, right? Target नीचे होगा. Okay, so second strategy also clear, very clear. Second strategy. अब इसका एक फायदा क्या है? See, we want to optimize the use of capital. Same capital जो सुबह लगा था, right? वो दोपहर तक खाली हो गया. Now 11:30 to 2 we are not doing anything. Okay, you do Netflix, you do what you want. Don't trade. Why I found, honestly, I mean, in this strategy basket I found, mostly afternoon market can be little choppy and unusual things. And morning is a good time. And then closing is a good time, the afternoon. Yeah, इसका psychology वो है कि try to capture the openings in the movement of the morning and the closing, which are of course the two most important parts of the trading day, right? So behind every strategy or every process, आपका thought process क्या है, वो आप खाली वो thought process को rules में translate कर रहे हैं. Finally, when all this is done, we have to finally decide how much capital we need to trade and how much quantity are we going to put per order. Why is this very important? So derivatives, like you said, you saw in the starting,
में उसके अंदर लीवरेज है। लीवरेज का मतलब आप 100 रुपए से आप 100 रुपए का ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप 200, 500, 1000 रुपया अभी ट्रेड कर सकते, यू कैन मैग्नीफाई इट। सो एज अ रिजल्ट आपका प्रॉफिट्स और लॉसेस दोनों मैग्नीफाई होता है। व्हाट ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड प्रॉफिट मैग्नीफाई होगा, बट जब लॉस होगा वो भी मैग्नीफाई होगा। सो दैट इज वाई कितना पैसा आपको यूज करना है स्ट्रैटेजी के लिए, वो एक बहुत बहुत क्रिटिकल डिसीजन है एंड बहुत अंडररेटेड है। मोस्ट पीपल डोंट focus much on it. Even when I was starting out, I had least importance I gave to this, and then learned over a period that this is a very important decision. Okay. So now we will recap. We will see this when we actually are also going to create the strategy. Right? So both strategies have been discussed. What are the important things are discussed? Let's see if there is any question related to this. हाँ, so नरेश का क्वेश्चन है स्टॉप लॉस कंबाइंड प्रीमियम पे या इंडिविजुअल लेग पे? So नरेश, it is on individual leg. If one SL hits, should we exit the other leg? No. So I'll just explain a little bit why on this. See नरे, जब आपने कॉल पुट बेचा, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल में लॉस होगा, राइट, यूजुअली, राइट। और पुट में क्या होगा? अगर कॉल में लॉस हो रहा है तो पुट में प्रॉफिट होगा, हो रहा होगा, करेक्ट। तो कई बार ऐसा होगा कि एसएल हिट होगा तो भी टोटल पोजीशन पे प्रॉफिट हो रहा होगा थोड़ा, या ब्रेक इवन होगा, या थोड़ा लॉस होगा, राइट, यूजुअली वही होगा। अब अगर कॉल स्टॉप आउट हो गया, अभी हमारे पास क्या पोजीशन बचा है? कॉल स्टॉप आउट हो गया, शॉर्ट कॉल स्टॉप हो गया, अभी क्या बचा है? शॉर्ट पुट। पुट सब लोग समझ रहे हैं, शॉर्ट पुट है। शॉर्ट पुट इज व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी या व्हाट व्यू? शॉर्ट पुट हम कब करते हैं? जब आपका लॉन्ग व्यू होगा, बुलिश व्यू है, करेक्ट। सो व्हाट हैज हैपेंड? मार्केट में बुलिश मोमेंटम आया, वो दिखा रहा है कि अभी वो ऊपर जा सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ जाएगा ही फॉर श्योर, बट जा सकता है। तो हम भी बुलिश टर्न हो गए, वी हैव टर्न्ड बुलिश from a non-directional kind of view which we started with. So that's why I said, remember the starting, ये हाइब्रिड स्ट्रैटेजी है जहां वो अडेप्ट करे। यदि हमने कॉल पुट बेचा और मार्केट रेंज बाउंड ही है या वॉलेटिलिटी क्रश हो रही है और हमारा एसएल हिट नहीं हो रहा है, तो दोनों कॉल पुट शॉर्ट रहेगा तो हम नॉन डायरेक्शनल ही है। बट अगर मार्केट ने कोई भी साइड डायरेक्शन दिया, we'll follow that. Okay, so that is answered. Yeah, so we have given an example of directional with this. Why keep a SL? Why can't we just, Shashi is asking, why keep SL? Why can't we just buy the call or put OTM to it? Yeah, Shashi, you can do that also. There are some strategies जहाँ पे, so what Shashi is saying, SL क्यों रखना है? हम स्ट्रैडल शॉट के साथ एक दूर का स्ट्रैंगल क्यों नहीं खरीद सकते? सस्ता कॉल और सस्ता पुट ऑप्शन, राइट? उससे मार्जिन भी कम होता है, बट उसमें एक चीज ऑफकोर्स है, आपका कॉस्ट भी आता है हेजिंग का, राइट? मार्जिन कम होता है बट कॉस्ट भी आता है। बट इन सम डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज आई डू दैट, you can do that also. Yes, it becomes a naked put sell on, that is true, but there is a SL, or like Shashi said, you have a hedge. So either there has to be a SL in percentage on the leg, और आपका स्ट्रैटेजी hedge होना चाहिए, राइट? और वो hedge जितना दूर होगा उतना आपका रिस्क बढ़ेगा, तो जितना पास hedge होगा उतना कॉस्ट भी लगेगा, क्योंकि आपको उतना प्रॉफिट भी कम होगा। पर I, in some strategy I keep both. I have a percent SL also and a hedge also. So usually I prefer to have percent SL, definitely. Usually I prefer to have in most of my strategies, right? Okay. Ankit is saying SL in system should be safe since it is intraday. Yeah, if it is, you're using a good execution tool, a good algo tool, then mostly with the SL in the system, it helps and it works. Yeah, so Chinmay saying example, abhi hum dekhenge, right? As we go forward, we'll see some example. Okay, so let's move on. So I'll just talk quickly for a second about this. Who's your favorite player in Indian cricket team? Who's your favorite player? MS Dhoni. Someone is saying, Chinmay is saying MSD. Bumrah. Okay, as a bowler, ठीक है। अगर बुमराह 100 मैचेस खेल रहा है या धोनी 100 मैचेस खेल रहा है, क्या वो हर 100 मैच में परफॉर्म करते हैं? क्वेश्चन है। रोहित, कोई भी प्लेयर ले लो, सचिन वी नो एज गॉड, he also would he have performed in all 100 match? No, it's not. It's being human, what we call, right? So human will have ups downs in performance.
what is important is average कैसा है इनका. एक तो of course why they are good players, because over a period of 100 matches maybe इनका एवरेज बैटिंग एवरेज 45 होगा, या बॉलिंग में वो 2-3 विकेट्स लेगा बुमराह, एंड विद इकोनॉमी ऑफ 5.5. So no player works all the time, okay, plays all the time same way. No strategy I know of works all the time, okay? But अच्छी strategy है तो कभी ना कभी उसका टाइम जब आएगा वो चलेगी, ऐसा है. So instead of trading one strategy, you trade a basket of strategies, right? That's a very good approach. And you want your strategies to be complementary. तो उसके बारे में थोड़ा सा और आगे बात करेंगे. But what is important is why is a team important, right? That I think even some of you are trading will agree to me that ऐसा नहीं है कि आपका सिस्टम में अपना रूल हर टाइम चलता है, ऐसा नहीं होता है, right? Okay, this is explained a little bit more mathematically, right? So what I'll do is actually I'll first build the strategy now, right? And we'll come back to this. So what we'll do, we'll just see now what we are doing is we have discussed the idea, we have discussed the strategy, क्या करना है. अब देखते हैं कि इसमें performance क्या है, result क्या है. So now we are starting a process called backtesting. Backtesting is where, like the word suggests, you go back in time, take historical data and check कि ये rules पे जो मैं कर रहा हूँ या सोच रहा हूँ वो rules ने क्या performance दिया था. As simple as that. So we go to uTrade Algos. Yes, I'm using this. So I'm into create strategy. Okay. By default, give some name. You can change if you want. Exchange is NSCFO. Underlying is from cash or future. This is for selecting the ATM. आपको cash price से ATM ढूंढना है या future price से ATM ढूंढना है. What do most of you do, or you know why this is important? See, there is no weekly future actually, right? There is no Nifty weekly future. और अभी जैसे सीरीज स्टार्ट हुई है दिसंबर सीरीज, अगर हम निफ्टी मंथली का प्राइस ले, ऑलमोस्ट इस बार 1% का डिफरेंस है निफ्टी मंथली और निफ्टी स्पॉट में. तो अगर मैं मंथली का 200 पॉइंट 250 पॉइंट का डिफरेंस है, अगर मैं मंथली से लेके एटीएम लूंगा तो वो 200-250 पॉइंट ऊपर आएगा, विच इज नॉट द करेक्ट एटीएम, राइट? So please, always for weeklies, I prefer taking underlying from cash. This will give you the more correct center of the market. As we are doing by ATM, we are trying to find center of market abhi kahan hai. So cash is definitely something I choose here for the weekly options for sure. Product intraday hai. Yes, and it's an intraday strategy. We are building on Nifty weekly. Okay, yes, so that remains same. Strike selection, I'm just going to choose ATM based, right? Now after choosing these parameters, ये leg details आ रहा है. अभी आप देख रहे हैं leg 1, ये leg है वो है जो actually execute होगा, right? leg 1, leg 2, leg 3, जितने भी legs हम देंगे ये actually अब execute होगा. ऊपर खाली एक template है टिकट बनाने जैसा, क्या पैरामीटर्स आपको डालना है. अब ये leg, ये यहाँ main action होगा. So what we are going to do is sell call option weekly current ATM. All right. We will choose leg. I'm just keeping it one lot for now. Leg settings. Okay. So nothing out of this we are using. Exit on the basis of, very important, right? Very important. Stop loss. Okay. So मुझे यहाँ stop loss देना है net PNL, right? 50%. This is strategy 1 we are creating, the 920 वाला. ठीक है. 50% का stop loss है. See, everywhere you see ये tool tips दिए हुए हैं. It's beautiful and very useful. If you go on this IE है ना, पूरा उसका description है डिटेल में, तो कोई भी doubts है तो you can use this as a first reference to check ये property में actually क्या हो रहा है, ये parameter. Fine. Now first leg is made. अब इसका exit time क्या होगा? So start time we have to make it as 9:20.
Okay, start time is going to be 9:20 set. First strategy ka exit time is 11:25. This end time is actually what is the latest time you want to take the position. But I can just keep this also 11:25 AM. Okay. All right. And square of time also is going to be same 11:25. Yeah. Okay. Execute on days. Which days we want to trade it? What strategy is it? 0 DT. Then we will execute only on Thursday. And execute only on Thursday. Now, once this is done, okay. So if you see what we are doing, जो process हमने discuss किया था, वो rules जो भी important चीजें हैं strategy के लिए, entry, exit, quantity, वो सब इधर आ गया है, right? वो सब ये screen में captured है. Now you just go and save and backtest. So let's say I'll just give this name as SG Strat 1. Okay. And I'm going to go and save and backtest this. Okay. So let's say last 1 month. So we'll just run a backtester for 1 month. Okay. Just want to show you how what happens. Now, as we are doing the backtesting, let's see if I can take any questions. Yeah, so VK saying, can we deploy both non-directional and directional strategy at one point, and me giving example of the same? हाँ, ये भी एक approach है to do what I told you. I'm starting with a non-directional approach. जब हम call put दोनों बेच रहे हैं, वो कब करेंगे हम? जब हम expect करते हैं market sideways होगा, market कहीं नहीं जाएगा, तो धीरे धीरे time decay होगा या volatility reduce होगी जैसे जैसे, तो all that can benefit us, and premium decay होगा जैसे जैसे, तो we can earn. Why most of these are popular for 0 DT? क्योंकि 0 DT पे आपका थीटा डीके जो प्रीमियम डीके है वो भी शुरू में मॉर्निंग में थोड़ा स्लो होगा, फिर बिल्टअप होगा और दोपहर को एकदम फास्ट होगा, राइट? तो दैट इज व्हाई सम ऑफ दीज काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज आर वेरी पॉपुलर, जो हम लोग 0 DT पे करते हैं. नरेश का क्वेश्चन है, शुड वी एग्जिट द हेज पोजिशन also after SL is hit? You can do it or you can leave it, also up to you. Amit is saying, kindly talk on directional trade based on certain parameter. So Amit, of course, in limitation of time, we are using this as an example just to study the process of building a system, analyzing it. But similar concepts are entry के लिए directional strategies. If I don't know if what you mean is कि मुझे super trend अगर closing price super trend के ऊपर है तो bullish है, तो sell a put or something like that, right? Say ये आप 15-minute candle पे कर रहे हो something. These kind of strategies can also be done and they are good, right? But for purpose of this webinar, we are covering these time-based strategies. Okay. Yes, you can backtest for longer periods also. That I think you can check with the uTrade team later. They will guide you. Now, let's just see some of the results, right? What have come. So, जब आप देखेंगे यहाँ पे इसका results देख रहे हैं. First of all, it has taken 5 trades. Why? Why 5 trades? So it's very important to check कि जो हमने सोचा है और जो हमने किया है उसमें gaps है या नहीं है या कम. सही. 5 ट्रेड क्यों है? 5 एक्सपायरी एग्जैक्टली एक महीने में विल बी 4 और 5 एक्सपायरीज, राइट? सो एवरी थर्सडे 5 थर्सडेज इन अ मंथ, इसलिए 5 ट्रेड्स. ओके, मतलब हियर इफ यू सी 20 और इफ यू सी 2 देन देयर इज समथिंग रॉन्ग, क्योंकि एवरी एक्सपायरी वी आर ट्रेडिंग फॉर श्योर. तो यहाँ जितनी एक्सपायरीज है उतने ट्रेड्स आने चाहिए. मैक्स ड्रॉडाउन नहीं है बिकॉज दीज हैव बीन विनर्स. व्हाट इज ड्रॉडाउन? What is maximum drawdown? So this we will come to when we will
check a little bit about the metrics of the how to analyze a strategy, kya parameters hai, but very key among them is drawdown. Yeah, drawdown is, say you started the strategy, okay, and you started and it's the bad phase or losing phase for the system. So it will lose money, then make money, lose money, make money, वैसे, right? So in all the losing phases, which losing phase is the worst? उसमें कितना loss हुआ है? That is called maximum drawdown. So each losing phase is drawdown, and how much that is in percentage, right? From your peak capital, जहाँ capital जहाँ से drawdown चालू हुआ, वहाँ से कितना है वो, that is max drawdown, right? So win percent 100, all the trades have worked so far on this. Of course, is this strategy, can we say ये strategy में loss ही नहीं होता? Absolutely wrong conclusion. It is like any player, right? It will also have losing. It's just that we have seen 1 month, this month, it has been all winning trades. When you do it for a year, so in the end, I will share the statistics for yearly. So वहाँ पे you'll of course see the win rate and all. So right now it is saying average profit on win days is 1700 rupees around. तो एक lot पे around 1700 का profit हुआ है on average. However, very important, it is given in the end. Please note, additional charges such as brokerage, STT and all these are not included in this. So you have to understand कि ये P&L जो है ये real net P&L नहीं है जो अपने हाथ में आया है, ये gross है, तो इसमें से costs आएंगे जो हमको deduct करने पड़ेंगे, right? So is this interesting? You can see how your money has moved, how the market did at the same time. Nifty flattish रहा, तो flat to actually थोड़ा bearish था, right? 2400, 24,300 say 20, about 60-70 points down, whereas our strategy made money, which is good. Next, you can see each trade. Okay, तो आपको हर एक trade का start date, start time. Here, I think Chinmay was asking for example. So Chinmay, ये जब आप transaction detail देखते हो, आपको एक example मिलता है कि exactly क्या हो रहा है, right? So this is very useful to go into this report and see, कितने बजे एंटर, देखो 9:20 को हो रहा है सब, ओके, एंड है, all are exited at 11:25, so SLs have not got hit for this period. 73 का ऑप्शन 13 में गया, कट हुआ, तो ये P&L है, right? These are all the exit prices. Okay, so yeah, so again, now I want to just go back once to the strategy, right? So go to edit. Now, this was obviously only leg one, okay? That is why you are seeing that. So maybe what it's showing, all the call shortcut targets have come, so ye bearish tha, right? But the actual strategy is got both legs. So we have to make the leg two also, right? So how we'll do that? We'll just add leg, right? Now we'll sell. Now you'll see how it changes, right? So we just saw for one leg. Now you go and make put options, short also. Okay, weekly current ATM, leg settings, okay, stop loss in percentage is 50%. Okay, even this has got, now this here you have to make sure you change the time. Entry time is, oh sorry, this is the first strategy only, my bad, so this remains same. Okay, now we'll just again save and backtest this leg two. Okay, so I'll again give this, now this whole process will run again. Now you'll see how it might have lost also or made, it has net made some money. Almost same as the call short part. So it means put short में और थोड़े से जगह पे things might not have worked, right? Otherwise it has worked. So this way you keep on checking
कि whatever you want, have you exactly created that way? And how you keep verifying is you go to the trades. This is the best way, right? To check. So now you can see calls के साथ puts भी हो रहे हैं, short put भी trade हो रहे हैं, right? वो भी 920 हुआ है, वो भी 1125 को exit हुआ है. So this is how you have created strategy one, correct? Any doubt with the creation? Yeah, I'm coming to the capital. Any doubt with the let's go step by step. Any doubt with the creation of the strategy, the first strategy? All good. Now, same thing, what you do, you have to repeat it for strategy two. I'm not doing that now. Of course, you are lucky you have a chance to take a 7-day free trial, as I think Parul has just posted. So literally the best way to, I'll tell you honestly, maximum learning जो system trading का हुआ है has been by doing, trying out, trial and error and playing with it in a way. It's, we call tweaking, tinkering, कुछ भी आप बोलो, right? वो terms. तो आपके पास data है, tool है, मतलब through the tool, मैंने in the back testing I didn't talk about data, which is a very important part. Options का data is quite vast, right? And so many strikes, 1 minute data. So there is at the back end, there is a lot of calculation. Before that is a lot of preparation of data just to clean the data, है ना? Make that, उसमें gaps, काफी issues हो सकते हैं and stuff. I'll not get into that in detail, but data is very, very important, right? So all that is available, right? So now we can, at no code, as you heard in the starting, I've not written single line of code, right? Without writing any line of code, we have reached here and got a glimpse into ये कैसा कर रहा है, right? So please use this opportunity to try out. And when you try out yourself, right, there are quite a few strategies already built. There, you will have some samples, you can copy them, play around. Most traders create वैसे ही करते हैं. They learn, they see. आप कहीं कुछ वीडियो देख रहे हो किसी का, या आपने किसी का कोई आइडिया देखा, बेस्ट वे क्या है चेक करने का? खुद चेक करके देखो, राइट? योर कन्विक्शन विल कम ओनली व्हेन you yourself build it out and check it, right? Or you are convinced completely about the manager. जो मैनेजर कर रहा है ठीक है, प्रोसेस है, या आपने मैनेजर का डिलिजेंस किया, उसका जो भी अप्रोच है उसको आपको थोड़ा समझ गया, एंड देन यू आर लीविंग द अंडरस्टैंडिंग रिस्क एंड लीविंग इट टू द मैनेजर. अगर आप खुद कर रहे हो, देन यू हैव टू डू ऑल दिस योरसेल्फ, राइट? सो ट्रायल एंड एरर एंड verifying these yourself is, I think, the best way to learn and go forward. So repeat that for strategy 2. You can create that. Once you've created both strategies, now thankfully we also have a ability to create team. अभी हमने एक ही प्लेयर किया है, से MSD किया है. अभी हमको साथ में बुमराह भी लेना है, या धोनी भी, राइट, आई मीन कोहली भी लेना है, राइट? So you add that. Another strategy is go on like that. You can go on adding. Once you added all the players you want, now in this, for the purpose of this demo, we are just using 2 players. एक morning का player, एक afternoon का player है, right? Stop loss is different है. Now we can test the portfolio together. तो आप पूरे portfolio का एक साथ back test कर सकते हो. That will happen when you add your another strategy, right? And you can save it and save and review and again back test, right? So that is another very useful thing. Portfolio back testing is a very good feature when you're creating systems, multiple systems, especially together. Okay. So coming back to now just seeing the performance of the whole system together. Of course, we want to see कि भाई पूरे system का performance कैसा था together, portfolio. So before now coming to that, just talk a little bit about the importance of correlation of returns. So जब आप players choose कर रहे हो, team में खाली सब राइट हैंडेड बैट्समैन यूजुअली नहीं होंगे, राइट? दे टेक अ राइटी आल्सो, लेफ्टी आल्सो. जस्ट टेक अ एग्जांपल. 2 ट्रेडर है आपके पास. पहला ट्रेडर 1 महीने में 4% बना रहा है, सेम टाइम पे दूसरा ट्रेडर 0 बनाता है, ठीक है?
बट दूसरे महीने में फर्स्ट ट्रेडर ने 0 बनाया और दूसरे ने 4 बनाया। और ये पैटर्न से ये एकदम हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है, बट जस्ट टेक अ एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। नाउ अगर आप एक कंबाइंड ट्रेडर बनाओगे, उसका एवरेज क्या होगा, दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2, यानी ये कंबाइंड ट्रेडर 2% हर मंथ बना रहा है, right? तो अगर अब आप रिटर्न्स देखोगे, तीनों ट्रेडर ए, बी और कॉम्बो, लेट्स से 3 ट्रेडर हो गए, अब ए, बी एंड कॉम्बो ऑफ ए एंड बी, तीनों के आप सालाना रिटर्न देखोगे तो 24% ही है। फर्स्ट भी 24 है, सेकंड भी 24 है, तीसरा भी 12 into 2 is 24, यहाँ 4 into 6 is 24। एवरेज रिटर्न तीनों का 2% है। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन इज रिटर्न कितना वोलेटाइल है। ट्रेडर ए और बी का रिटर्न 42% है, विच इज ऑल्सो वेरी लो एंड गुड। बट ट्रेडर सी का देखो, जो कॉम्बिनेशन है, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन 0 है, डिविएशन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंट है एकदम, 45 डिग्री लाइन है इक्विटी कर्व का, राइट? तो ये ड्रीम है कोई भी प्रॉप डेस्क, जैसे आपने सुना होगा, जो प्रोप्राइटरी डेस्क ट्रेड करते हैं, राइट? या ऑफ कोर्स दे हैव एक्सेस टू a lot of capital and they can do a lot of strategies. Now at our end, at retail end, still we can at least use that concept and create few strategies, right? So that we get the chance to play with multiple players, right? And reduce the overall volatility of our return, and maybe make little less, but try to make more consistent return. Less and more भी बहुत subjective चीज है, but must have seen horror stories of when some episodes happen, right? How the losses can be significant, right? If SL is not put or the quantity is very high, right? Then few single days of movement can reduce result in काफी loss of capital, 30, 40, 50% of capital also trader lost on single day option. All that you want to reduce by creating a basket of strategies and sizing your trade well. So coming to the combination now of both of these strategies, now how much capital is needed for each strategy? That is a question. ये सिस्टम के लिए मार्जिन अबाउट 75,000 का मार्जिन लगता है, ठीक है? Drawdown was around, maximum drawdown was about 8-9,000. However, what I do is, with experience I can tell you, ये max drawdown खाली एक, see, understand one thing, back testing and all is just a model कि past में क्या हुआ था, एक model, एक idea था. It's important thing, of course, rather than just going blindly. ये हमको एक idea देता है कि क्या हुआ, right? But doesn't mean live में exact ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता, okay? If market is more or less doesn't change too much from what your thought process was, you might get somewhere in towards this, less, more, around this. But it will never be कि exact जो past था वो future में exact same होगा, ऐसा नहीं. So what if this drawdown that has come वो exceed हो future में? होता है कई बार, surely होगा. The longer you trade, you will get times when your drawdown is exceeded. So what I do, I buffer for more. ये 8,000 है ना, I'll assume ये 15,000 हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा, example, right? So keep some additional buffer capital for max drawdown and little buffer also. So with a 1 lakh capital, we can trade this. Now, what is the advantage? Why we are doing 2 strategies with 1 lakh and not 2 lakh? Because वो 1 lakh है, वो morning में deploy हुआ, afternoon में free हो गया, फिर same पैसा वापस deploy हो रहा है 2 बजे और फिर वो 3:20 को free हो जाएगा, right? So we are rotating the capital. Yeah, that's why you're making more efficient use of it. Now on a 1 lakh capital, the combined here, I have even taken taxes. I have even taken slippage into account, and I have taken some brokerage into account. Whatever is applicable to me, you can take according to what plan you take, what broker you choose, etc. Slippage, I've seen that over a period of time, when you do many trades, slippage, and you use a good tool, a good algo tool. So
I've analyzed about 450 trades जो हमारे सिस्टम में हुए हैं लास्ट 3-4 months में. तो the slippage is 0.25%. 0.25 means 100 रुपए का अगर ऑप्शन बैक टेस्ट में दिखा रहा है कि 100 रुपए में बिका, वो एक्चुअली 99 रुपीज 75 पैसे में बिकेगा. 100 रुपए पे 0.25% इज 25 पैसा. सो आई हैव टू रिड्यूस दैट 100 की जगह 99 रुपीज 75 पैसा लेना पड़ेगा. और से वही स्ट्रैटेजी 100 रुपए में स्क्वायर ऑफ हुआ तो यहाँ पे वो जीरो दिखाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, बट एक्चुअली 25 पैसा बेचते वक्त लगा, 25 पैसा खरीदते वक्त ज्यादा देना पड़ेगा, तो 50 पैसे का लॉस हो गया. right? तो आई हैव बजटेड फॉर दैट. वो निकालने के बाद, राइट, दीज आर द स्टैट्स. वी आर गेटिंग अबाउट 17,500 which is 17.5% return. Right, 52 weeks around, you can see that is there. Average profit per period is about 330 rupees per week. Win periods is 64% winning rate है इसका. So out of the, if I trade 100 weeks, 64 weeks में पैसा बन रहा है, 35-36 weeks में पैसा नहीं बन रहा. अब ये भी इंपॉर्टेंट है, जब बन रहा है कितना बन रहा है और जा रहा है तब कितना जा रहा है, राइट. सो इन विनिंग पीरियड वी आर मेकिंग 1140 and we are losing about 11, almost 1:1 है. फिर भी why is the strategy profitable? Why are we expecting, why we can expect to make money out of it? Because win rate you can see is almost 2/3, right? Almost 2/3 of the trades are winning. Maximum single trade में 3,700, maximum loss in a single trade is 3,674, and maximum drawdown has been about 8,500. So this gives some idea ki if we did this, okay, what had happened, and we have some basis to get some expectation ki kya ho sakta hai, right? So this broadly completes the presentation. Okay, if there are any more questions we can take. So broadly तो सर आपने during your presentation काफी सारे questions cover कर लिए हैं, but again there are a couple of questions which were left behind. There is a question that as per your experience, in which indices this works best? So it used to work very good on Bank Nifty weekly also. Of course, unfortunately now we don't have the Bank Nifty weekly, but you can try variations of this even in positional kind of strategy. You can try in Sensex options, definitely. Sensex options may you can try. And a good question again is then you can build it across 2 or 3 indexes. But Nifty, it does very good. Kind of. And Nifty में liquidity is also not, of course, not a problem much. Slippage कम होता है. Chance of the spikes is almost equal nowadays across strategies. Still, Nifty gives you the maximum comfort because what more can you ask than Nifty, right? So most comfort to trade Nifty. Great, sir. It was an interesting session. So last question someone just posted is from Rishit. Suppose we have 4 strategies and if 2 strategies have good ROI over 3 years back tested, then can we run that 2 winning ROI strategies 2x and the other 2 strategies 1x? What is your advice? See, I didn't talk about one other thing actually I forgot to mention is the correlation between these 2 strategies. जो मैंने वो slide दिखाया था as example 0. So in दोनों strategies का correlation actually is negative 0.06. So जितना correlation near 0 है, it means that is better, right? Even being the same type of system, morning and afternoon, and changing the SLs, correlation are different. Now, just imagine आपने वो 4 ली जो दोनों ने अच्छी की है, वो 2 भी जो आप ले रहे हो वो भी आप presume कर रहे हो कि they can do good, right? So if you have a solid reason कि you're more confident about these strategies and the others less, so you can do that, but you should have a reason. Otherwise it's like simple बोलूं तो vanilla ice cream में you don't go wrong, right? Everyone likes it, so divide equally across strategies. But if you have a solid reason, yes, in some
strategies, then I would give more weight to it. So then I will try strawberry or butterscotch if I take that little risk. But there has to be a reason for it. That's all I'm saying. Because ऐसा नहीं हो आपने कोई रीजन नहीं है और ये दो जो अच्छी चल रही थी वो खराब हो गई और ये जो खराब चल रही थी वो अच्छी हो गई, then you're doomed, right? Because you have doubled the size on this and reduced. So I'm sharing with all failures that we have made in past, and there are many. So just all the learnings come from that only, actually. Great, sir. Great. Thank you so much. It was a very insightful session. And before we wind up, just wanted to ask a question. Okay, what would be one advice that you will suggest to any trader who is just about to start algo trading, and any one common mistake that they should avoid while struggling and while starting with algo trading? So I think one advice is keep trying to come to webinars like these, and there are many. There are many people who are taking initiative. So this of course is a great series, but keep on the lookout and attend as much as you can. Meet traders, right? So, and then try out on your own. So that is the best way to learn is whatever you're reading or listening to, try, test it and try. Plus, that will give you the idea of what works, what doesn't work. It will give you, believe me, I don't have any formal education in technical analysis till today. No formal degree. Everything, whatever few indicators I know, is all by building them, coding them, testing them, and trying them. So my knowledge is limited, but whatever it is practical. So my advice is to do as much of practical as you can. And one mistake to avoid is don't try to squeeze out and get the results by torching the data, we call, right? First cut में अगर आपको थोड़ा results थोड़ा भी decent नहीं आ रहा है, right? Maybe the strategy is not great. I believe that. So if I have a hypothesis and idea and I try it और first cut में वो अच्छा नहीं है, right? I would tend to not torture and try to what we call curve. So there are many things around that could go wrong. This is just one advice to you. Thank you so much. And I hope if any of our participants would have been able to say, they would all be saying thanks, and they are also saying that on the chat as well. Thank you so much. Thank you. Thank you so Thank you much. everyone for taking out time for our webinar. Thank you so much.